Hi everyone, and this is Abhishek here, and I would like to share very important things today. So first of all, I believe that you all are doing really working hard and with clarity. Okay, this word is very important, right? With clarity. Clarity का मतलब है it's not something आप बस पढ़े जा रहे हो and just keep on reading. No, you should be having a proper picture, a map with you that right now what all things you are doing and what all things needs to be completed, right? So एक पूरा आइडिया होना चाहिए, एक मैप तैयार होना चाहिए, and on basis of that you should be doing. And this is not something you need to be taught by someone. ये आपको अभी तक आ जाना चाहिए, right? So if you are doing that, I really appreciate that. But if you are not doing, I will say it's not a good thing. आप बेसिक भी सोचो, it's not something I should appreciate, right? तो आपको बिल्कुल भी इस चीज का ख्याल रखना है. And I will speak very point to point. I'm not here going to make you any to smile or to make you happy. No. What is wrong? What is wrong? अगर नहीं है ये clarity, it is not something acceptable at this stage of your preparation. Now, why I'm here is I would like to share something very important that this year, every student, I explained my students in the registered student in the session, but other students, right? आप देखो इस साल this year you have very less time to prepare for the mains examination. Okay, you have your exam on 25th May, prelims examination, and then you after 25th May, if you see, you have June, July, and August. 22nd August you have the mains starting, right? So you have 2 months, 20 days to prepare for your mains. So it is actually 1 month less than what the previous year students got, right? So the basic is that in those 2.5 months, we are not going to leave so much content to prepare for the mains, right? बहुत basics आपके पास होना चाहिए, it's fine. Basic content होना चाहिए so that we can clear. But आपके पास बहुत सारा content उस 20 days के लिए नहीं होना चाहिए. This is unacceptable. So what you are going to do right now is you are not going at the extreme ends, right? For example, right now you are doing your mains preparation, most of you, right? So आप इस time पे you have to include prelims also, and when you are doing prelims after January, February, whatever you have planned, right? At that time you have to include your mains part also, because you are not going to shut down your optional, your ethics for the 3 months while you are doing your prelims. You will forget everything after prelims examination, right? So you have to be not going to be extreme ends that last के 3 महीने I will do prelims only. This is not acceptable. This is not the approach. You should go for 25 examination. आपको ये बिल्कुल एक extreme ends पे ना जाकर इसको mix करना है. For example, if I just say the example of the gold tide, what we do is Monday to Saturday we do the mains part, but Sunday the very first 3 hours we do the prelims part, right? This is what has been taught. तो आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, आपको टेस्ट दिए हैं, आपको क्वेश्चंस दिए हैं, so that you can practice few prelims part in the Sunday morning. This is what. So this is the strategy of the gold tide. But wherever you have joined or are going to join, except just leave me behind, whatever ABC coaching you are planning to join, make sure that you start your basic test now for the prelims part. एक तो इससे burden भी कम होगा in the end, and you will be somehow gaining that momentum. बिकॉज आप फरवरी में जाते आपको एक मोमेंटम गेन नहीं हो पाएगा. इट विल टेक टाइम टू सेटल, राइट? आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आने में, क्वेश्चंस को समझने में, देन आपका वो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उससे आपको जो दुख होगा उससे ओवरकम होने के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम. सो यू नीड टू सेट दैट मोमेंटम फ्रॉम नाउ. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर ऑन संडे एटलीस्ट 3 hours, राइट? सो एटलीस्ट प्रैक्टिस द प्रीलिम्स पार्ट. आप बेसिक्स करो, अपने बेसिक टेस्ट को खत्म कीजिए, न्यूज़पेपर व्हाटएवर यू हैव रेड अबाउट द प्रीलिम्स पार्ट आप उसको रिवाइज करो. देन एंड में जाके यू विल फील कंफर्टेबल ऑल्सो, यू विल गेन मोमेंटम ऑल्सो, और फिर एडवांस की प्रैक्टिस एंड में अच्छे से हो. इसीलिए वी हैव टू कंप्लीट द बेसिक्स नाउ, राइट? और इन द एंड व्हेन वी विल बी डूइंग द प्रीलिम्स पार्ट, हम ऑप्शनल और एथिक्स को साथ में कैरी करेंगे. एंड वी विल ओनली बी एबल टू डू दैट इफ वी आर डूइंग राइट नाउ द प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. आपको एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं जाना है. यू हैव टू स्टार्ट योर बेसिक प्रीलिम्स टेस्ट नाउ. एंड दिमाग पे अगर प्रेशर नहीं डालोगे तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. ओके,
That's why when you see on the Gold Tide platform, I never try to ask you questions वो easily आपसे solve हो जाए. I ask which is very new to you. I'm exploring different areas and all, so that आप बहुत ज़्यादा learn करो कि end में you just revise them, right? तो ये मेरी strategy है for my students. It's you have to decide what strategy you have to do for the prelims. But this is what you have to understand. Basics करो. End में we are going to do the advanced part. और प्री कम मेंस को साथ में लेके चलो. डोंट गेट इनटू द एक्सट्रीम एंड्स, राइट? सो दिस हैज टू बी क्लियर विथ यू. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे, एंड बाकी बातें तो और भी होती रहेंगी, बट फॉर नाउ कीप वर्किंग हार्ड. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. फॉर द लास्ट 5-6 months इट्स लाइक समथिंग, एवरीथिंग यू हैव टू पुट ऑन द पेपर. एंटायर एनर्जी हैज टू बी डन और हैज टू बी कम आउट, एंड इट शुड नॉट बी लेफ्ट इनसाइड wasting time here and there. बिल्कुल नहीं. It's like your life is there at stake. After you go from here empty hand, life is not easy at all. I'm saying it's not easy at all. आपको लग रहा है ऐसा? It's not easy. आप जाके zero से start करो कुछ. It's not an easy task. So make sure you are working very hard. You are doing everything possible to clear your exam as soon as possible and in 25 examination. Thank you so much for today. We'll see you next time.